Hello and welcome back to today's session. We're going to talk about the IELTS Labeling a map. Is it clear? Okay, इसमें बहुत सारे ऐसे students होते हैं that they face problems. Yes, as I told you guys earlier that IELTS multiple choices and IELTS Labeling a map are comparatively tougher. मतलब इसमें students थोड़ा सा challenging feel करते हैं. So the thing is that what are the following points and strategies or some of the tips to take care of before we get to the map? Okay, number one, हमारे पास जो है read the instructions. अच्छा, as I told you guys many times before, it is important to take care of the reading instructions in every other question types, whether it's reading, whether it's writing, yes, and whether it's listening. कोई भी हो, स्पीकिंग के अलावा जनरली अगर आप कोई भी मॉड्यूल फेस करते हो तो इंस्ट्रक्शंस रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई टोल्ड यू गाइस दैट असल में इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स जब आप नोट कंप्लीशन को देखते हो आईएलटीएस लिसनिंग में, तो ये होता है कि आपने जो है उसमें सिर्फ 1 to 2 वर्ड्स लिखने होते हैं, या उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया होता है दैट यू शुड नॉट राइट मोर देन 3 वर्ड्स और नॉट मोर देन 2 वर्ड्स. अगर आप इससे ज्यादा लिखेंगे तो वो क्या होगा, दैट्स गोना बी क्रॉस, दैट्स नॉट गोना बी एक्सेप्टेड एट ऑल. ठीक है, वो फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगा. मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस का ख्याल नहीं रखते, जनरली मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस व्हेन यू गो फॉर एनी अदर क्वेश्चन टाइप्स, whether it's listening, whether it's reading, or whether it's writing. Getting? So normally हमारे पास क्या है, direction words. Yeah, direction words are very very important for the IELTS listening. मतलब हमारे पास क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वो रफली स्टार्ट ले लेते हैं, ना तो वो, मैं आपको बता चुका हूँ, ना तो वो टाइम का ख्याल रखते हैं कि जी वो 30 सेकेंड्स जो आपको कीवर्ड्स के लिए दिए होते हैं ना, तो उसका ख्याल रखते हैं, वो तो छोड़े, बिल्कुल ही उनको पता ही नहीं होता कि डायरेक्शन वर्ड्स क्या है. आईएलटीएस लिसनिंग और आईएलटीएस मैपिंग के लिए जो है डायरेक्शन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मतलब गो स्ट्रेट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट. Is that clear? Take the first right, take the first left. Is that clear? These are all direction words. Head right. Is that clear? Under, below, and all around. ये आपके पास क्या है, direction words है. Is that clear? Direction words बहुत ज़्यादा important है that you have to keep in mind. तो all around आपने इनका ख्याल रखना है. इसी as I told you guys कि मतलब go straight. Is that clear? Go straight, or take the first left or right. Take the first left or right. ठीक है, या right, मतलब इनका ख्याल रखना है आपने. इसी तरह और डायरेक्शन वर्ड्स है जो मैं शेयर करूंगा, and I'll give a link in the description as well. Plus I'll send you guys through WhatsApps कि हमारे पास कौन कौन से डायरेक्शन वर्ड्स है जो आपने उनका ख्याल रखना है. All around हमारे पास जो है what we have to be very very much careful about, हमारे पास जो है identifying the key features. अब ये बहुत ज़्यादा important है. हाँ, असल में जब भी आईएलटीएस लिसनिंग और मैपिंग की तरफ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास इसमें की फीचर्स क्या होंगे, मतलब व्हाट टू लुक फॉर. फिर जब भी हम देखते हैं तो लिसनिंग में असल ये होता है कि वो हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ से लिसनिंग जो है मैप में जो है कहाँ से स्टार्ट हो गया और कहाँ पर जो है वो खत्म हो रहा है. Getting or not guys? कहाँ से स्टार्ट हो गया और कहाँ जो है खत्म हो रहा है. That's the thing. तो मेक श्योर कि आपने सबसे पहले जो आपको 30 सेकंड्स दिए उसमें आप की फीचर्स को जरा देख लो. की फीचर्स में आपने क्या क्या देखना है. सबसे पहले तो मतलब आप स्ट्रीट्स को देख लो, आपके पास जितने भी लिसनिंग है आप स्ट्रीट्स को देख लो. यू शुड टेक अ लुक ऑफ द स्ट्रीट्स. इसके अलावा आप बिल्डिंग्स को देख लो, ब्लॉक्स, बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स, उनको देखो. ठीक है गाइस, यू शुड टेक अ लुक ऑफ द बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्स ऑल अराउंड. एंड यू हैव टू सी कि ये कौन सा स्ट्रीट है. अब आप देख रहे हो मैप में, ये पोर्ट स्ट्रीट है, ये ग्रोवर स्ट्रीट है, ये आपके पास जो है बीच रोड है, ये पाम लेन है, ये आपके पास जो है ओवरऑल डार्लिंग स्ट्रीट है. तो ऑल अराउंड आप देख सकते हैं, अगर एक बंदे को समझ आ जाए जी कि यहाँ पर हमारे पास इतने स्ट्रीट्स अवेलेबल है जी, ये स्ट्रीट्स है हमारे पास, और इनको अगर समझ जाए कि जी इस स्ट्रीट्स के साथ नियर बाय लोकेशन जो हमारे पास है सुपरमार्केट है, यहाँ पर जो है हमारे पास कैफे है, इसके साथ साथ डार्लिंग स्ट्रीट में जो है टाउन हॉल मेरे पास अवेलेबल है, पोर्ट स्ट्रीट में जो है जी बिल्कुल लाइब्रेरी के साथ टच है, क्लोज बाय है, इसके राइट पे अवेलेबल है. तो once you come across understanding the locations,
the streets, the blocks, buildings, the arrows. आप arrows को समझ लो, इशारों को समझ लो, arrow कहाँ जा रहा है। दूसरा आपकी फीचर में entrance भी आता है। आप entrance देख लो, असल में बहुत सारे ऐसे मैप्स होते हैं जिनके डबल एंट्रेंस होते हैं। एक वो यहाँ से आते हैं, दूसरा यहाँ से आते हैं, तो उनके लेफ्ट राइट्स पे चेंज होते हैं, उनके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पर they vary sometimes, getting that's the thing। तो entrances बहुत important है, स्पेशली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब लिसनिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है। अब जी लिसनिंग कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। असल में ज्यादातर लोग ये करते हैं कि जी लिसनिंग उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता। लाइक फर्स्ट जो 10 to 20 सेकेंड्स होते हैं और 10 to 30 सेकेंड्स होते हैं, उनमें वो बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पाते, फोकस करते नहीं है, जिनकी वजह से उनको पता नहीं होता कि जी जो रिकॉर्डिंग है वो कहां से स्टार्ट हो गया, कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो गया। जी पोर्ट स्ट्रीट से इसने स्टार्ट लिया है, डार्लिंग स्ट्रीट से लिया है, बीच रोड से लिया है, ग्रोवर स्ट्रीट से लिया है, अब ये किस तरफ जा रहा है तो उनको ये पता नहीं होता। तो ऑल अराउंड की फीचर्स में जो है आपने स्ट्रीट्स, बिल्डिंग, ब्लॉक्स, एरोज, एंट्रेंस, स्टार्टिंग पॉइंट्स, और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको डायरेक्शन वर्ड्स का बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना होगा कौन कौन से डायरेक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो कि लिसनिंग में आते हैं और लिसनिंग में मतलब इंक्लूड होते हैं और अवेलेबल होते हैं, तो दे आर द थिंग। चौथा जो हमारे पास है आंसर पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट इन सीक्वेंस। या आंसर पॉइंट्स और ऑलमोस्ट इन सीक्वेंस, जब आपके पास जितने भी आंसर पॉइंट्स होते हैं जी ये सीक्वेंस में जाएंगे बिल्कुल। मैप में जो है ऑल अराउंड इट्स गोना बी नॉन सीक्वेंशियल समटाइम्स, मैप में भी बिल्कुल ही जब नंबर वाइज होते हैं तो बिल्कुल सीक्वेंशियल होते हैं, दे विल गो सीक्वेंशियल। एंड इसी तरह आपके पास जो आंसर पॉइंट है, मतलब असल में स्टूडेंट ये होते हैं कंफ्यूज इसमें होते हैं स्टूडेंट दैट जी यहाँ पर जो है मतलब लाइब्रेरी के साथ नेक्स्ट जो है मेरा मतलब फॉर एग्जांपल सिटी सेंटर है या स्क्वाश कोर्ट है, तो जी स्क्वाश कोर्ट को आपने देखना नहीं है, हमें तो फाइंड रेस्टोरेंट करना है, तो जी उसको छोड़ो। जब आप रेस्टोरेंट की बात होगी तो आप रेस्टोरेंट का लिख लो कि जी नंबर जी में कहा रेस्टोरेंट जी में है जी कि नहीं, रेस्टोरेंट जो है वो एफ में है कि रेस्टोरेंट ए में है या आई में है, कौन से में है। तो डायरेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताया होगा कि जी आई से लेके जी तक जितने भी है मतलब आपके पास ये लेटर्स, इनको 11, 12, 13, 14, 15, 16 में प्लेस करना है, आपने देखना है ए टू जी। तो ये बहुत ज्यादा सीक्वेंशियल होंगे, इट्स वेरी वेरी सीक्वेंशियल, ऑर्डर में होंगे बिल्कुल। 11 में रेस्टोरेंट आएगा, इसी तरह ये बिल्कुल नहीं हो सकता रेस्टोरेंट से वो डायरेक्टली जंप करेंगे होटल में जाएंगे, या होटल में डायरेक्ट होटल से वापस आके डायरेक्टली वो चाइल्ड केयर सेंटर जो भी है इसको वो इशारा बनाएंगे। नो नो नो, इट्स गोना बी वेरी वेरी मच इन ऑर्डर, दैट्स द थिंग। दूसरा आपके पास है नेविगेशन, यस, लैंग्वेज वर्ड्स, लोकेशन वर्ड्स, नेविगेट दी लोकेशंस। लोकेशंस को देख लो जी, आपके पास आपने सुना होगा लोकेशन वर्ड्स का कि जी फॉर एग्जांपल टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, across the building, in front of the building, behind that, under, below. You might have listened to these location words. ये मैं आपको भेजूंगा guys, and I'll show you later in the next video. I'll teach you guys all of them, and I'll give a link as well. But make sure कि आपने जो है location words जितने भी हैं वो words, वो preposition, वो common words जो आपके साथ वो लोकेशन शो करते हैं उनको आपने बिल्कुल ही सीखना है। तो ऑल अराउंड वी डिस्कस के इंस्ट्रक्शन रीड करना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। डायरेक्शन वर्ड कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, गो स्ट्रेट, टर्न राइट, एंड आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ देम, प्लस आई एम गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। आइडेंटिफाइंग द की फीचर्स, रसे ब्रदर की फीचर्स के बमुंग से गुरु स्ट्रीट्स बगुरु बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स, एरोज, एंट्रेंस, स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये सब देखने हैं। आंसर पॉइंट्स और इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में होंगे, प्लस नेविगेशन इज इंपॉर्टेंट, नेविगेट द लोकेशन, नेविगेट द आइडियाज। Getting to know, guys, that's the thing that you have to keep in mind. I know you've all got a map of the area, but it hasn't been updated for some time. So I'd like to spend a few minutes just explaining where everything is before you set off to explore. Now, we're here, of course, at the library. And directly to our right, in this grand old building, is the town cinema. There are, sadly, plans to turn it into a function centre, but for the time being, it's a great place to catch the latest flicks. Now, if you are hungry, probably the best place to eat is actually right in front of us, on the other side of Grover Street.
The large grey building is home to the finest restaurant in the area, and just behind it, you'll find a more casual cafe, a good spot for morning coffees. I know some of you have small kids, so you'll be happy to hear that there's a wonderful playground in the town. From here, the library, you just walk right and turn left at Port Street. Keep going until you hit Darling Street, and you'll find it on the corner to your right. Speaking of children, every Monday there's a story time hour at the town hall, which is not far from the playground on Darling Street, opposite the supermarket. Oh, and for those of you who need to enroll your kids in childcare, there's a brand new centre. If you cross Beach Road at the supermarket and head down Palm Lane, the childcare centre is the large green building on your right. All right? Now, once you've dropped the kids off, you might like to head over the road to do your laundry, should you need to. There's a great place on the corner of Beach Road and Palm Lane. You'll get to know the staff there pretty well, I'd say. Probably the most important place to mention, since it's where you're all going to be working for the next few months, is the hotel. Actually, you can see it from here. Just head out of the library onto Grover Street, and it's just over there on the corner, on your left. Oh, lastly, someone asked me to recommend a fitness club in town, and unfortunately, it's closed for renovations at the moment. But never fear, I can recommend a fantastic outdoor pool that's open to the public. From where we are now, head right and take the first left. The pool is the first building you come to on your right. Well, if there aren't any questions, I think it's time to